According to the Congress sources, Delhi police is trying to detain Pawan Khera at the airport. He was about to board an Indigo flight to Raipur, and it appears that there were attempts to detain Congress Neta Pawan Khera just when he was boarding a flight to Raipur. This is the latest information that we get. Now, what's the reason for his detention? That remains to be established. We're going to try and track those developments. For now, for what we hear, Pawan Khera, the Delhi police, is attempting to detain him as he's just about to board a flight to Raipur. This is the basic information that we have. We're going to try and track details on this. This comes according to Congress sources that the Delhi police was attempting to detain Pawan Khera at the airport. He was about to board the Indigo flight for Raipur. Supriya Srinath, our correspondent, bringing us more on that. साथ से इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन जो 50वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुली को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। All right, there you have it. Supriya Srinath, and Congress Neta, says there is no reason for why Pawan Khera, the spokesperson of the Congress party, should be detained. What's the reason to this kind of high-handedness? And unless he is let off and allowed to board the plane, none of us will board that flight. This is Supriya Srinath. My colleague Supriya Bharadwaj joining me for a little more. Supriya, a quick word. What's the reason for the Delhi police to detain Pawan Khera? Well, what we are learning right now, Nabila, is that there are two FIRs which have been registered against Mr. Khera in connection with some statement that he has given recently, and in connection with that only, when Mr. Khera was all set to board the flight for Raipur, the Delhi police came and they stopped him from not boarding that flight, the Indigo flight. And there are other senior leaders which include K.C. Venugopal, who is the General Secretary Organization, at the same time Randeep Singh Surjewala, and who's of the Congress party and the communication department who are present there at the Delhi airport. The flight is, they are not boarding the flight and they're protesting at the airport itself. And they're saying till the time Pawan Khera is not allowed to board the flight and head towards Raipur, they are not going. Mr. Khera, at the moment, we're trying to get in touch with him. He hasn't responded so far. His phone is continuously busy. Here in Raipur also, the Congress party is saying, because after the success of Bharat Jodo Yatra and that fiery speech by Rahul Gandhi in Lok Sabha, the BJP is on the back foot. And that's why they're resorting to these tactics so that there is some khalal in the AICC plenary session. This is what the Congress party is maintaining in Raipur, where I am at the moment. What we are hearing is that the preparations are in full swing, but AICC media department head Pawan Khera has been stopped to board the flight is a big news, and is having a huge impact here in the Raipur also. And so far we have heard from Supriya Srinath. She also has gone all out and attacked the BJP, and at the same time they are also saying, the Congress is maintaining that Mr. Khera is going from Delhi to Raipur to attend the proceedings of the AICC plenary session, the 3-day session, and then he's going to come back to Delhi. But why police is stopping him from boarding the flight? Supriya, from what we see there, visuals coming in of Supriya Srinath along with Pawan Khera, a bunch of other Congress netas who are all standing right outside the Delhi airport. These are the live visuals. I'm going to play that out for you yet again. What exactly Congress leader Supriya Srinath has to say as Pawan Khera has been allegedly detained by the Delhi police. हमारे साथ थे इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन जो 50वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है
और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डिप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। All right, that was Supriya Srinath. Now, what exactly is the cause or reason behind the police detaining Pawan Khera? It appears that the Congress, or rather Pawan Khera, the spokesperson of the Congress party a little earlier, a few days ago, had spoken about Narendra Modi, and while referring to Narendra Modi, he got his middle name wrong. Let me cut across exactly to what Pawan Khera had said that really infuriated the BJP, condemning him. There were complaints that were filed against him, accusing him of trying to insult Narendra Modi and his father. This was Pawan Khera's bite a few days earlier that has sparked this row. जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। All right, that was exactly the message that Pawan Khera had given, or rather a statement that he had made, which sparked enough controversy, especially within the BJP. The BJP Neta is quite angry with Pawan Khera, accusing him of insulting Narendra Modi as well as his father. This was the allegation that was leveled against Pawan Khera, that he did it deliberately. It was done with an intention to mock Narendra Modi and his father. And it appears that a complaint was filed with this regard as well. And now, while Pawan Khera, a few days after he's made that comment, he's attempting to board a flight to Raipur at the Delhi airport. And we believe he's been detained by the CRPF there. That's what Supriya Srinath has to say. In fact, I'm going to cut across to Supriya Srinath yet again, if we could play out her reaction on why exactly is Pawan Khera detained, what's happened, and they're all right at the Delhi airport. These are the visuals coming in from the Delhi airport live. Let me cut across to Supriya Srinath as she spoke. हमारे साथ थे इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे, तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है।